Hello. Hello. On the count of three, two, and one. Yes, both the captains stay, the team can disperse. We have the two captains along with the match referee Saruday Naik. We have Hitesh Talwar for Kai Warriors and Viraj Pranik for Cancona Warriors. Hitesh to spin. Viraj head tail is the call, and head it is. Hitesh, you have won the toss. What is your opt and the reason behind it? We'll choose to bat first. What is the reason for batting first? No, actually, the pitch seems to be good, and later on the ball might come slow onto the bat. That's the reason. What do you think is a good total to defend on the surface? Total will be around 160, 170. All the best. Viraj, having lost the toss, does it make any difference for you?
We would have also chosen to not bat first, but basically we would have chosen to bowl first. I think the toss is doesn't matter here. Yeah, it doesn't matter as long as you have enough bowling and batting in your team. Any changes in your playing 11 from the last match? Yeah, a couple of changes. So one outstation player is added, and also a local player is also added. All the best to you. So that's the news from the center. It's Qayi Warriors who have won the toss and elected to bat first.
And who are here at GCA Go Cricket Association ground, the Purvarim Academy ground. The third quarterfinals being played between Qayi Warriors and Cancona Warriors. The toss just concluded. Qayi Warriors won the toss and they opted to bat first. Looking at the batting lineup, Manish Kakode, Sarthak, BK, Sanket Mandrekar, Peter Fernandes, Hitesh Talwar, the captain, Pundalik Naik, Samir Sawant, Sarvesh Sawant, Tanish Tendulkar, Sahadev Kandolkar, Tejas Desai. And if you look at the lineup for Cancona Warriors, Viraj Puranik, the captain, Vaishak Pagi, Ajinkya Desai, Gandraj Desai, Vasu Tiwari, Jagdish Patil, Rahul Mehta, Sujit Ubale, Mayur Gide, Sudhakar Bhosle, and Anuj Yadav. Both teams looking pretty balanced. And both teams have outplayed their opponents in the first encounter. This will be a very good contest to watch out. Excellent two quarterfinals we have witnessed yesterday. In the first quarterfinals, it was Panjim Purvarim Institute of Cricket who went past Sportswick CC. Sportswick CC looking comfortable, requiring just 52 from 42 balls with 8 wickets in hand. They collapsed with the fall of wicket of Manthan Kutkar. They were blown away after that wicket and lost the match by 10 runs. In the second match, the quarterfinals number 2, Priority Titans versus Sunny Sports. Priority Titans, they were 48 for 4, 68 for 6. When Tunish joined in, Mayank Rawat, what a knock it was by Mayank, having a strike rate of below 100 when he was into his 30s. Accelerated, multiplied his scoring rate and posted 171, 57 runs being scored in last 3 overs. They were 114 for 6 after 17 overs in the first innings, when Mayank and Tunish got behind the bowlers. And in the run chase, they couldn't maintain the required 100 and kept on losing wickets at regular intervals. And in the end fell short. Let us see which two teams from quarterfinals 3 and 4 will enter the semi-finals. The first match of the day being played between Qayi Warriors and Cancona Warriors, and later on it will be Khorlim 11 versus Chogle Sports Club, Chogle Cricket Club. Manish Kakode and Sarthak, the two openers. Manish, talented all-rounder from Goa, representing Goa under 23. We have Sir Babani and Sir Prashant Gadekar, the two officials. Jagdish Patil to start the proceedings from the GC office bearer end. Manish on strike, Sarthak at the non-striker's end. Yes, first ball of the day. Played off the hips. Will pick up a single. Off and running here. Qayi Warriors with a single. Nice feeling for Manish. Ball nicely coming onto the bat. Early conditions. And Jagdish will be looking to make early inroads here. Both the captains were happy with the toss. They got what they were looking for. Played it late, just guiding the ball into the third man region. Both the batters getting off the mark.
with single apiece. Very watchful in the very first over. And very good line and length maintained here by Jagdish Patil. Not providing any sorts of width in the first two deliveries. Just bowling stump to stump line. Oh, flirting with danger here. Looking to poke at the away going delivery. Manish this time. If you look at the field position, the two fielders outside the 30-yard circle in the power play. One at the deep square leg and one in the third man region. Then you have the short 45 behind square on the onside. A slip in position. Backward point, short cover, mid off, mid on. Again, beating the outside edge. This is what you can expect from Jagdish Patil. He is a seasoned campaigner. Two singles and then two dot deliveries. Yesterday in both the matches we saw 50 runs opening stand. And that is exactly what will be required here. A change in field now. Deep point goes back. And third man comes inside the 30-yard circle. The way Manish approached in the last two deliveries, Jaggu making the necessary field change. Charging down the wicket and plays in the square leg. Will pick up a single. Aggressive approach here from Manish. That brings Sarthak at the striking end. Score moves on to 3 without loss. You are witnessing the MACQUA State Premier League. MACQUA State Premier League presented by MACQUA Services Private Limited. Another change in field. Mid wicket comes in now. Short ball, mid-time shot. Chance here for the fielder. And he puts it down. He was not at all looking comfortable as he was approaching to take the catch. Jagdish Patil certainly not happy with that effort. Would have picked up wicket in his very first over. In fact, it's a single to bring to the end of the first over. It's 4 without loss. Qayi Warriors after electing to bat first. Sarthak will be thanking God. He was batting on 1, now he's batting on 3. Sujit Ubale bowling the second over from the combox end. Well bowled, good start. 5 without loss. Sujit starting with a dot here. Maintaining the line outside the off stump. Oh, wrapped on the pads. Manish is certainly not looking comfortable batting out there. With the ball is behaving at the moment. Started off pretty well because it was on the pads. Easily nudged away for a single. But ever since then it has been a struggle for him.
He needs to give time for himself. Needs to look how the surface behaves early on. Well played, very well played here. Getting close to the pitch of the delivery, allowing the ball to come on to him and then playing late. That single takes the score on to 6 and brings Sarthak at the striking end. 6 without loss. MACQUA Services Private Limited, office situated in Gera Imperium Pato, established in 2019, dealing in data fiber, cable laying, digital marketing and financial services, having their branches in Goa, Karnataka and Maharashtra. Short ball, was not at all in a position to pull that ball, and that is why lack of timing. Will get a single though. Very good start here by Cancona Warriors. They're into the second over of power play and they haven't considered a single boundary. This just easily puts the pressure back onto the batting team. They know they have elected to bat first. They need to score runs, but they need a good start also. Again charging down the wicket, trying to get close to the pitch of the delivery. Another single. A steady start made here by Qayi Warriors. In their first match, they won the match by chasing the total. But here they have some other planning in their mind, looking to post a total which might put the opposition under pressure in the run chase. They have quality batters in their lineup. Oh, flirting with danger again. A dot delivery to end the second over. 8 without loss. First over 5 runs being scored, second over only 3 runs. And Jagdish Patil into his second over. I think Jagdish has been preferring that office bearer end of GCA, and he's been very successful from that end, picking up a few wickets in the very first match. Banged in short and straight to mid-on, quick single. This is what they need to do. Pick up singles on regular basis. Try and rotate the strike every now and then. Not allow the bowler to bowl to a particular batter. And that becomes more challenging for the batter when you face plenty of deliveries to the same bowler. Cuts it off the back foot into the deep point, deep backward point. Will pick up a single. Just looking at the field placement with deep square leg and deep backward point, the length will be certainly short of good length. It won't be that fuller with mid-on up in the circle. Banged in shot, and this time chance, no, away from the field again. He has been testing the batter with a short pitch delivery. That is why he has those 2 fielders on the boundary. If the batter mistimes the shot, the ball balloons up in the air and those fielders will come into play. Excellent execution of plans here from Jagdish Patil. Score moves on to 11. Manish batting on 6 of 10. Sarthak batting on 5 of 5.
Another short pitch delivery, not able to put it away. Looking to guide the ball up and over the short third man fielder. The intention was good, but not the execution. Just 3 runs from the first 4 deliveries. 3 singles and a dot. Fuller line delivery and goes downtown and has got a maximum. The first MACQUA sixer of the innings. You could see first time Jagdish over pitching the delivery and paying the price. It was right in the slot for the batter. And he dealt it with tremendous hitting. Straight over the non-striker's head. On the side screen. On the full. Score moves on to 17. First MACQUA maximum. Short ball. And I think he has picked up a wicket. He has got his man. It was drifting down the leg side. He didn't get the proper connection. And good take by Vasu down the leg side. That's 17 for 1. Sarthak has to depart. Yes, this is the MACQUA State Premier League. Thanks to all the sponsors associated with MACQUA State Premier League. Majestic Bhojan, Multi Cuisine Bar and Restaurant, Parvarim, Goa. Desert 10 more events. Jenny, Mumbai. Engine Enterprise Private Limited, Mumbai. Goa Health Monitoring Services. It has been a great platform being given by MACQUA State Premier League to the players to gel with the outstation players, learn from them, get experience from them, how they take through the innings, how they handle the pressure. This will be a very good learning experience for the Goan youths, playing along with the 4 outstation players, along with the Ranji players. It's like a talent hunt for the fresh players. Single has been picked up. That takes the score on to 18. New batter Sanket. Sanket, what are the signs from Sanket here? What can you predict? Sanket coming in at number 3 position, having lost Sarthak in the 3rd over. Jagdish, the most promising bowler, wicket-taking bowler. And a dot delivery by Sujit into his 2nd over. How many times have you seen Jagdish Patil picking up a wicket in the power play? Last time he was brought to bowl in 2nd. Oh, thrashed away. He has clubbed onto it. First boundary for Sanket. These are good signs from Sanket, getting his first boundary to get himself off the mark. First MACQUA boundary of the innings.
In the previous match, the Jagdish was brought to bowl as a change in bowler. Didn't open the innings with the ball, but today he did and brought in that wicket in his very second over. Overpitch delivery has mistimed it. The ball has stood up in the air. Fielder settling underneath, and what a catch, running away. Excellent catch, mistimed shot, slower ball did the trick, and they lose their second. Sanket, it was a good sign, but not lasting long. Dismissed for just 4 runs, 22 for 2. Suddenly they have good openers in their lineup. That just surprised me why Samir Sawant is still in the dugout. He is an explosive opener. Usually provides the start to his team. Very surprising. I think they might be having some other plans. Try to keep him away from the new ball. New batter Peter Fernandes. Peter Fernandes, left-handed batter. Sanket giving good indications, cutting the ball through the point region of that previous delivery before getting out of the very next. Excellent execution by Sujit, bowling that off-cutter delivery, taking pace off and luring the batter to go aerial. What a catch it was from the mid-off fielder, running almost 15 yards backwards. Short ball played with soft hands will be a single to get off the mark. Playing fine. Oh, fumble in the field. The ball racing away from the fielder and will find the fence. This is what you need to avoid. You have the opposition 23 for 2. You need to apply more pressure trying to stop the ball in the outfield. But here a boundary has been considered. That ease up the pressure. Score moves on to 27. Completion of 4 overs. Qayi Warriors 27 for 2. I think Manish Kakode has to play a big inning here for his team. He is a seasoned campaigner. He must have been playing lot of cricket this season, being kept very busy. He has been opening the innings, so he has a big time in this innings to play a very long inning. Jagdish into his third over.
Left and right and combination. Oh, the ball hurrying onto the batter this time. On the onside will be a single. And it's a leg by call by the umpire. That single takes the score on to 28. Into the 5th over of the power play. Just 11 more deliveries remaining with the field restriction. The YouTube broadcaster AB25 covering this tournament live on YouTube. Going with the same field for Manish. Another great delivery, no width provided. Looking to carve the ball into the gap. Manish using the pace of the bowler because the third man was inside the 30-yard circle. Just looking to place the ball between the wicket keeper and the short third man. But not getting success. Very lucky the ball not getting outside edge. It is a big risk when you are attempting that shot. Oh, has got enough bat on it. Rocked on the back foot. And the ball has gone for a MACQUA maximum. Second MACQUA 6 of the innings. And first MACQUA 6 for Manish Kakode. He's a genuine all-rounder. We know what he can do with the ball. Having picked 7 wickets in an inning. And he played his last under 23 match. But very good handy batter. Usually bats in the middle overs. But now opening the innings, a different job for him. Oh, just using the pace of the bowler. 6 followed by a boundary. A MACQUA 4 has been registered here by Manish Kakode. 10 runs coming off the last 2 deliveries. Looking to open now, Manish Kakode. He took his time early on. And now he knows what is the pitch has to offer here. Cashing in with the field restriction. Score moves on to 38. 10 runs coming off the last over. Now already 11 from the first 4 deliveries. Looking for the move on, Manish. And that makes another change in the field. Mid-on has gone to long on after that 6. Oh, looking for the same shot. It's a dot delivery this time. Smart thinking by Jagdish. Just keeping the ball away from his arc. 17 of 16, Manish. Peter batting on 1 of 2. Sarthak and Sanket, the 2 batters to be dismissed. These 2 need to stitch on a partnership for at least another 7 overs from here. Charging down the wicket and place the ball into the gap, into the extra cover boundary. Second MACQUA boundary of the over from Manish Kakode to end the over number 5. Completion of 5 overs. It's 42 for 2. Qayi Warriors opting to bat first. And for the next 5 overs, it will be a change in voice on the microphone. Over to Krishna Devji.
और अच्छी गेंद ऑफ के बाहर से हल्के से दिशा बदलाई। देखिए टाइमिंग सबसे अहम था, जब बल्ला बिल्कुल लाइन तक लेके चले, इसी बल्ले का मुंह खोला, वहां पर जो सिंगल निकला और सिंगल के साथ टोटल स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा 44 पर 2 विकेट के नुकसान के बाद। खेल चलता हुआ मैदान पर आज ऑफिशियल अंपायर गड़ेकर सर, उनके साथ दूसरे अंपायर बाबनी सर, आपको भी नमस्कार इस माहौल पर, इस खेल में। पीटर लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, आक्रामक खिलाड़ी और बहुत बार शतक के बारे खेल चुका है खिलाड़ी। ओ पैड लाइन पर गेंद, शायद इंपैक्ट सबसे अहम था वो लेग स्टंप के बाहर। देखिए अंपायर बहुत बार देखते हैं जब आप लेफ्ट हैंडर के लिए राउंड विकेट से और विकेट से गेंदबाजी करते हैं तो अब जो आपका कोन रहता है ना, वो कोन लेग स्टंप के बाहर रहता है, पिचिंग लाइन लेग स्टंप के बाहर रहती है और गेंद भी बाहर निकलती है। और कभी कभी क्या होता है कि गेंद आप डालते तो मिड स्टंप, लेकिन गेंद बहुत दूर जाता है ऑफ स्टंप के बाहर कट होकर। ये सब कुछ अंपायरों को देखना पड़ता है, उसके बाद का निर्णय था वो नॉट आउट का। और फिर से अपनी तरफ आने गेंद को आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोला, वो सिंगल निकला, वाइडिश गली के बगल से निकली गेंद, 1 रन निकला और टोटल स्कोर 45 रन पर पहुंचा इस खेल में। एक खूबसूरत माहौल मैदान पर, इस खूबसूरत माहौल के साथ वो खूबसूरत सुबह इस मैदान पर। और डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया मनीष ने, डॉट गेंद निकलती हुई शफल किया अपने इरादे पर। मैं कहूंगा मनीष थोड़ा रुकना पड़ेगा मैदान में, ये पार्टनरशिप को लगभग 10 ओवर तक हल्के से चलाते रहिए जहां से एक अच्छा मोमेंटम प्राप्त हो जाए। लेकिन गेंदबाज जो कि हम कहते हैं हमेशा सबसे क्रिकेट में सबसे बड़ा काम है आपका विकेट लेना, पार्टनरशिप बनने से पहले तोड़ना। अगर पार्टनरशिप बनती जाएगी तो बाद में आपको चेसिंग करते हुए वो परेशानी का घेरा उठाना पड़ेगा मैदान पर। और इस बार कवर पॉइंट पर एक्स्ट्रा कवर पर खेला गेंद को, एक्स्ट्रा कवर सी मारे का से बाहर, मैक्वा चौवा मैदान पर 4 रन के लिए। छह ओवर के बाद टीम का स्कोर पहुंचा 49 रन पर। एक खूबसूरत माहौल के साथ मैदान में खेल चलेगा। नया गेंदबाज अनुजा मैदान में पहुंचा। कदकाठी बिल्कुल छोटी है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं क्रिकेट में कदकाठी का कोई सवाल नहीं है। कद कितना भी बड़ा हो छोटा हो, आपका टैलेंट, आपका विश्वास, आपकी जो योजना रहता है वो योजना अगर सफल कर जाए तो आप मैदान पर इस वक्त खेल में बनेंगे। और अच्छा ग्रेड ऑन सेट पर हल्के हाथ से खेला, ठीक है, टाइमिंग उतना ठीक नहीं है। पीटर फर्नांडिस एक आक्रामक खिलाड़ी है, विकेट कीपर बल्लेबाज है। और दबाव की स्थिति मैदान पर, और फिर से ऑन साइड पर हल्के से मिड विकेट पर खेला, वो रन वहां पर एक ही मिलेगा। इक्का दुक्का बनने के बाद रनों में इजाफा पहुंचा 50 रन अब जाके पूरे हो चुके इस मैदान पर, 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। देखिए काई वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय मैदान पर लिया। सामने से कानकोन वॉरियर्स टीम को कहा कि इतनी दूर से ये टीम आ चुकी है तो आपको शुरुआत के माहौल में फील्डिंग पर लगाया जाएगा। वो फील्डिंग उनके लिए बॉलिंग मोर्चा संभालेगा, और बॉलिंग करते कानकोन टीम ने 5 ओवर में 2 विकेट नुकसान के बाद 43 रन खर्च किए मैदान पर। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि 2 विकेट चटकाए मैदान पर। उसमें से सार्थक था जो 10 नंबर जैसी पहनकर आउट हुआ, और दूसरा खिलाड़ी उसके साथ आउट हुआ, मतलब 2 खिलाड़ी आउट हो गए। क्या कमाल का माहौल बना के रखा इस खेल में। ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, वाइडिश गली पर गेंद गुजर चुकी है, 1 रन और निकला मैदान पर। देखिए सोच के साथ ये टीम उतरी है,
मैच को थोड़ा सा बिल्कुल इक्का दुक्का बनाकर मैच को थोड़ा आगे लिया जाए, आगे गिला ले जाकर शायद कहीं ना कहीं उस समय पर वो अटैकिंग बैटिंग बाद में देखने को मिलेगी। भाई भरपूर बैटिंग इनके पास है, बैटिंग में कोई कमी नहीं इनके पास है। एक योजना, एक खेल बहुत बढ़िया मैदान में, और प्रेशर अगर बात बताइए यहां से एक माहौल के साथ ये खेल बनता हो मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर खेलने का पहले प्रयास के ऊपर गेंद शरीर पर लगी, वहीं पर खड़ी। पीटर फर्नांडिस एकदम शांत खेल रहे। अगर पीटर की बात यहां से बताई जाए, 8 गेंदों में 3 रन, काफी धीमी शुरुआत है। ऑफ स्टंपर के फिर से कट किया इनको, पीछे हटकर बैकफुट से शॉट लगाने का प्रयास करे, पसंद करे मैदान पर। और देखिए सवाल वो बहुत अच्छा है मैदान पर पीटर के लिए। और फिर से बिल्कुल बल्ले के बीच हल्का सा खेला, ओ शायद राउंड का मौका। मामला थोड़ा गंभीर हो सकता अगर गेंद सीधी निशान। देखिए विकेट कीपर गेंदबाज बता रहे थे अगर थ्रो नॉन स्ट्राइक एंड पर होती तो पीटर के लिए लौटने के वापसी के चांसेस बहुत समाप्त होते मैदान पर। मतलब पीटर को मैदान में बिल्कुल वापस जाना पड़ता। पॉपिन किस तरह पहुंचे ना पीटर, लेकिन चलिए 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ अब टोटल पहुंचा 52 रन पर। ठीक है, पीटर ने पीछे मुड़कर भी देखा कि स्ट्राइक के बल्लेबाज पहुंच गए नहीं पहुंच गए, ये सब कुछ देखा, ये सब कुछ कह गया वहां पर, और वापस इस मुकाबले में खेल। अगर देखिए क्या वहां पर माहौल बना, टॉस जीतकर कानकोन टीम टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है, लेकिन अभी तक इस खेल में अगर देखा जाए तो 7 ओवर समाप्त होने के बाद 52 पर पहुंचा। अब यहां से तो ये पता चल रहा है कि लगभग 6 के आसपास रन रेट है, ऊपर भी है। लेकिन अगर दूसरी बात बताई जाए तो दुशार सर 2 विकेट निकल चुके हैं। अगर 2 विकेट और कानकोन टीम ले पाती है तो शायद कानकोन टीम का दबदबा वापस रहेगा। लेकिन दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो मनीष और पीटर ये जोड़ी थोड़ा समय व्यतीत कर रही है मैदान में, ग्राउंड पर आप थोड़ा व्यतीत। देखिए हम बहुत बार कहते हैं शुरुआत कोई कितनी अच्छी है बुरी है ये सबसे मायने नहीं रखता, आप अंत क्या करते हैं मैदान पर, ये बहुत बड़ा जरूर रहेगा। शुरुआत अगर आपकी धीमी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंत अगर अच्छा हो 180-90 बन जाए तो बात बन जाएगी मैदान पर। और इस बार बिल्कुल शॉट को खेला कवर बाउंड्री पर, कवर पॉइंट का खिलाड़ी पीछे, 1 रन निकला। पीटर अपने निजी टोटल पर पहुंचा 5 रन पर और टीम का स्कोर पहुंचा 53 पर, जबकि 2 विकेट नुकसान के बाद टॉस का काई वॉरियर्स टीम ने पहले जीता। बैटिंग करने का उनका निर्णय वो अभी तक बिल्कुल अच्छा मैदान पर। अब बिल्कुल मनीष ने कह दिया वहां पर यहां पर शायद हेलमेट मंगाया गया, यह आवश्यक है। कल शायद एक बल्लेबाज को गेंद लगी थी, हाँ बिल्कुल जहां पर आप फोन लगाते ना वहां पर लगी थी गेंद कान के नीचे, शायद यही शायद नुकसान हुआ। लेकिन देखिए हम बहुत बार कहते हैं कि आप कितने भी बड़े दिग्गज हो, सुनील गावस्कर ने जो किया वो काम अलग था, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया उनका। मतलब वेस्ट इंडीज के सामने सबसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने विदाउट हेलमेट के लिए, लेकिन आजकल ये सब कुछ सुविधा आपके पास है मौजूद। ओह लाइन को दूर रखा ऑफ स्टंप के बाहर, वो तेज गेंदबाजी वहां पर मैदान पर। देखिए आज दिग्गज भी खिलाड़ी बिल्कुल विराट कोहली हो या फिर रसल भी हेलमेट पहन कर आते, क्योंकि उनको पता होता है कि एक आध गेंद अगर बल्ले पर लगकर कहीं पर शरीर पर लग जाए, आपको लगा विकेट कीपर बाउचर को गेंद लगी थी आंख पर, शायद तो उसके बाद उनको क्रिकेट छोड़ना पड़ा। एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी मार्क बाउचर। और इस बार ऑन साइड पर ऑन दी हवा में थोड़ा सा फ्लिक जरूर किया था, हल्के से गेंद को ऑन साइड पर सिर्फ हवा में रखा गेंद को। टाइमिंग वो कमाल की थी मनीष की, 1 रन निकला। और शायद देखिए थोड़ी सी गपलत, और ये देखिए ये कमाल का मैच है, ये रिस्क जरूर था, शायद लगती तो मनीष के लिए मुश्किल थी मैदान में। दूसरा भी रन मैदान पर, देखिए क्या वहां पर हुआ, 2 रन वहां पर बनाए गए, लेकिन 1 रन बहुत डेंजर था मैदान पे। पचपन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में, खेल चलता हुआ 8वें ओवर का। देखिए रन रेट अभी तक ठीक ठाक है मैदान पर। ऑफ टर्न के बाहर कट किया इनको कवर बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर फील्डर है लेकिन बनेगा वो दर्शक मैदान पर। मैकवा चौवा मैदान पर मनीष के बल्ले से 4 रन के लिए।
59 पर पहुंचा टीम का स्कोर, मैदान पर माहौल बना के रखा। देखिए टाइमिंग, वो एक रन आपने खर्च किया, स्ट्राइक बदली, मनीष के हाथ में स्ट्राइक ली और उसी के साथ वो चौवा मैदान पर देखने को मिला। वो कमाल का खूबसूरत टाइमिंग मैदान पर। ये टाइमिंग का खेल है गुरु, ये टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट खेल में। आप थोड़े ऊपर नीचे हो जाएंगे टाइमिंग ना, तो शायद मैच आपके हाथ से चला जाएगा। अच्छा गेट, काफी समय तक इंतजार किया गया, हल्के हाथ से आखिरी समय तक बल्ले का मुंह खोलेगा। देखिए पीछे हटकर लेट कट भी उसे कुछ कहा जाता है, उस अंदाज का वो शॉट था। हालांकि वो गेंद स्लिप में नहीं चलेगी, वहां पर गेंद निकली पॉइंट पर, मतलब काफी समय व्यतीत किया वहां पर। आखिरी समय तक गेंद को देखा गया, वो सिंगल निकला। बड़े शॉट के बाद वो सिंगल की कहानी, टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 60 रन पर। ओह, शरीर के दूसरे खेलने का प्रयास किया वहां पर, वाइड बॉल। डॉट गेंद निकलती हुई मैदान पर। कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में शॉट को खेला, कवर बाउंड्री पर, एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा से बाहर, गेंद 4 रन के लिए मैदान पर। मैक्वा चौवा मैदान में निकलता हुआ, बहुत सुंदर टाइमिंग मैदान पर। मनीष के बल्ले से निकला चौवा, टीम का स्कोर पहुंचा 65 पर। और फिर से ऑन साइड पर लेग स्टंप के बाहर भी गेंद को हल्के से मोड़ा, कलाइयों के सारे शॉट्स कर ले, हम पर के ठीक बगल में गेंद निकली। मनीष को देखिए आक्रमण किया, जैसे खराब फील्डिंग निकला उसके बाद तो 2 बाउंड्री मनीष के बल्ले से निकली। 66, 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका, 9वां ओवर चल रहा है। अब रन रेट ने बिल्कुल, अगर बात बताएं, 2 बाउंड्रीज के साथ थोड़ा सा परड़ा भारी अब इस समय पर सामने वाली टीम का, काई वॉरियर्स टीम का मैदान पर, कानकोन टीम पर। वो इस बार बल्ले पर लगी, स्लिप में निकली है, थोड़ी सी गफलत हुई वहां पर, लेकिन साथ साथ ग्राउंड की फील्डिंग की दाद देनी पड़ेगी। हालांकि फील्डर गिर जरूर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद बैकअप सब कुछ आलबेल मैदान पर। 1 रन वहां पर मनीष के वजह से 67 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। और अगर यहां से बात बताई जाए तो मनीष और पीटर, ये जोड़ी थोड़ी सी पार्टनरशिप बना रही है मैदान पर। 67 टीम का स्कोर इस मैच में। ओह, बढ़िया क्रिकेट, आखिरी समय पर बल्ले का बिल्कुल रुख बदला, बाहरी गेंद को हल्की सी दिशा दिखाई वहां पर। मनीष अपने टोटल पर 40 पर पहुंच चुके और पीटर 95 मतलब 6 पर, और टीम 68 पर। देखिए जो बातें हो रही इस मैदान पर, पीटर एक बहुत गुणवान खिलाड़ी है, गुणवत्ता बहुत इस खिलाड़ी के पास है, लेकिन उसको साबित करना पड़ेगा। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, गेंद को शरीर के करीब लेकर गेंद पॉइंट पर फीड हो चुकी है, 1 रन वहां पर मिलता हुआ। 1 रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा, टीम का स्कोर पहुंचा 69 पर। 8 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 9वें ओवर का खेल चलता हुआ इस मैच में। ओह, बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट, वहां पर लेट कट खेलने का प्रयास किया, लाइन से चूक के वहां पर डॉट निकली गेंद, और डॉट के साथ ही 9 ओवर समाप्त हो चुके और टीम का स्कोर अब जाके मैदान में पहुंचा। इस समय पर इस खेल में कुल मिलाकर
69 रन पर। शायद वापस हेलमेट भेजा गया, अब स्पिन को लगाएगा मोर्चे पर राहुल मेहता को। लेफ्ट खिलाड़ी पीटर, पीटर 14 गेंदों में 7 रन, लगभग 50 का उनका जो स्ट्राइक रेट है अभी तक। ये 50 से कब 250 में चले जाएगा ना, ये पता नहीं चलेगा बात में आपको, जब सेट हो जाते तो। ओ ऑफ टर्न के बाद पीछे हटकर कट किया गेंद को, ओ कवर पर थोड़ी गफलत और वो खराब फील्डिंग। मुझे लग रहा है कि तीसरे के लिए कॉल होता तो भी जाता, लेकिन नहीं, वहां पर 2 ही रन वहां पर बनते हुए 2 रन के साथ फिर पहले टॉस अगर देखा जाए, पहले मनीष के खिलाफ स्ट्राइक बदली, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन दे, उसके तुरंत बाद बाउंड्रीज लगाई मनीष ने। क्या वही अंदाज रहेगा पीटर का भी मैदान पर? खराब फील्डिंग का परिणाम क्या होता है ये आपको सामने वालों को दिखा इससे पहले मनीष ने। ओ ये देखिए सीधा खेला, उड़ाया गेंद को, मैक्वा छक्के के लिए, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। क्या कमाल का सीधा वो शॉट, फील्डिंग खराब, उसके बाद वो छक्का। ओ ये देखिए पीछे हटकर कट मारने का प्रयास किया, वहां पर गेंद अंदर आ गई और चूके वहां से क्लीन बोल्ट मैदान पर। पार्टनरशिप टूटी वहां पर, देखिए पीछे हटकर खेलने का प्रयास किया, वो गलत शॉट मैदान पर, मेरे को गलत चयन किया शॉट का। ये देखिए शॉट गेंद उतनी नहीं थी, वही लेंथ थी, थोड़ी सी ऊपर भी डाला था गेंद को, ऊपर की गेंद को पीछे हटकर कट मारने का प्रयास किया और गेंद जाकर स्टंप पर टकरा गई। गलत लाइन पर खेल बैठे बिल्कुल पीटर, और आउट मैदान पर। पीटर ने बने अपने निजी टोटल में 15 रन। 15 रन और 40 रन पर अब नॉन स्ट्राइक एंड पर मनीष खेल रहा है मैदान पर। पचास रन की पार्टनरशिप टूट चुकी है वहां पर। 50 रन की पार्टनरशिप में एक अहम हिस्सा था वहां पर पीटर का, लेकिन पीटर थोड़ी सी खराब लाइन पर खेल बैठे आप। लेकिन कानकोन टीम की वापसी हो चुकी है, कानकोन टीम को मिलता हुआ तीसरा विकेट। 77 पर 3 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर खेल चलता हुआ। ओ पीछे हटकर हल्के से पुश किया इनको ऑन साइड पर। सिर्फ कलाया, देखिए कलाइयों का खेल है ये क्रिकेट। ओ शायद रिस्क लिया वहां पर, लेकिन थ्रो थोड़ा सा खराब निकला, 2 रन वहां पर बने। हितेश तलवार ने खाता खोला, अपने खाते में 2 रन बटोर लिए। 7
सर्वेश ने अपना खाता खोला 2 रन के साथ। एट्टी 85 पर पहुंचा टीम का स्कोर बैक में। Another misfielding. They have been very casual in the fielding department. We have seen few misfielding that have cost them hefty runs. In the last over, misfielding, Peter picking up second run, getting the strike back, and then the next ball clubbing it for a 6 over the long on. Last over, 2 MACQUA 6s. Gandraj bowling from GC of his better end. Oakley Nivap. They lose another wicket. Manish has seen 4 wickets falling from the non-strikers end. They are not at all getting the partnership that they are looking for. Four wickets have fallen. First wicket falling on 17, second on 22, third a good partnership of 55 runs, and then on 77 for 3, and fourth now on 86. Oh, fine, played it very fine. Just drifting on the pads, and that gets Hitesh off the mark. In fact, leg by, call from the umpire. So we'll have to wait for a bit to get off the mark. Score moves on to 87. Short ball played off the back foot in the long on. Will pick up a single. Yes, Manish has assessed the condition very well. And now he has to make sure that he bats entire 20 overs. Oh, well played with soft hands. Shy the stumps and they might go for the second. No, waiting is a call from Manish. They have been chipping in with wickets at regular intervals.
Just one good partnership of 55 for the third wicket. Hit on the onside will pick up another single. Score moves on to 90. 11 overs have been bowled and 90 for 4 Qayi Warriors. Not at all problems with the runs on the scorecard, but the problem is the 4 wickets that have fallen. When you bat in the last 5 overs, you at least need 4 to 5 wickets in hand. So they have to make sure that for the next 4 overs, they don't lose any wicket further. So that when you come at the business end of the inning, you can go all guns blazing. We have witnessed yesterday what Mayank did in the last 3 overs. Oh, the ball is up and will be over the covers. What a shot by Manish. Lovely shot. Exquisite timing. Taking the ball over the covers. Beautifully played by Manish. He, with that bound 6, MACQUA 6, he moves on to 49. 49 unbeaten. 1 run away from his half century. Yes, a nudge on the onside. He will raise his bat. What a quality inning has been displayed here by Manish Kakure. He knows the job is not yet done. He has to bat long. Might be happy if he gets that 3 figure against his name. Dragging the ball in length and played in the wideish long on. Will be a single. Has been a very fruitful tournament for the batters. Almost 12 to 13 half centuries have been scored in this tournament. Nobody has scored a century yet. Oh, this is the wicket. They were looking for, he has been pleading for stumping. I think the batter is safe. Manish was looking to step out of the crease. Manish looking to charge towards the bowler. I think the back foot was in the crease. It might have watchful. Oh, getting inside edge and on the onside into the backward square leg. It'll be just a single this time. Manish has just passed one phase. He has to pass the second phase of this innings. Hitesh, what a shot! What a magnificent shot by Hitesh! Sails over the long off. It's a huge 6. Another MACQUA 6 here for Qayi Warriors to finish the over. That brings up a 3-figure mark, 105 for 4. 100 coming up for Qayi Warriors. A great camera work by AB25. They have been following the ball like the mobile tower following the network. That marks the end of the 12th over. It's 105 for 4. $15 runs coming from the last over. Raj
Oh, Manish, he has to depart, exposing the stumps, looking to use the pace of the bowler, opening the face of the bat. And Manish departs. This is a big wicket. He was batting on 51, but has to go back with almost 8 overs remaining in the inning. What a price wicket has been picked up here by Cancona Warriors. The new batter Samir Sawant. Now he has to be very watchful. He has to play the inning that was played by Tunish Saukar yesterday. They still have depth in batting, but if Samir can play the last 5 overs, I think it might make a big difference in a total of 140 and 180. What a knock by Manish Kakure. He will be furious with himself of not able to capitalize on his innings. He had ample of time to improve his score. 5 for 105. Samir Sawant, the new batter. He has already 2 centuries in T20 career. Playing for Santini Sports and Cultural Club. Oh, goes underneath the bat, a dot delivery. He goes downtown and has got enough. 6 to get off the innings going. That is what we know about Samir Sawant. He is powerful striker of the cricket ball. Has surprised everyone coming at number 7 position. Nelson on the scorecard. They have been scoring boundaries, but they haven't been finding the partnership. Shot in length and will pick up a single here. Samir gets off strike and a leg by call by the umpire. That single takes the score into 112. The captain Hitesh and Samir Sawant. What can they do? How far can they go with this score? Shot in length and unable to find the placement. Find this fielder in the deep square leg. If it had played it a bit finer, he would have even got a boundary. Just in the backward square leg, if the ball was placed, it was easy boundary for the grabbing. Played with soft hands. Oh, fumble in the field. Couldn't stop the ball in the follow through. And another single to Samir Sawant. That wraps up the over number 13. 13 gone, 114 for 5. Qayi Warriors. $114 for 5. Oh, poor shot selection. This is poor shot selection from Zamir.
has been caught plump in front of the stumps. Looking for the switch hit. No thinking at all. We can call it a head without a brain. 6 wickets down. 114 for 6. New batter Pundalik Naik. Captain of under 19 Pundalik Naik. He has plenty of things to prove. Oh, very well bowled. The ball just ballooning up into the covers, but Viraj was just far behind to grab that catch. Cuts it off the back foot, but couldn't find the gap. How many left-arm orthodox have we seen in this tournament? Hiram Parab, another bowler who bowled outstanding spell yesterday, but couldn't be on the winning side. Oh, he picks up a single to get off the mark. That takes the score on to 115. Now it all depends on how many runs the captains can score and this partnership, how far can they travel. It was soft and straight to the cover fielder. This turning out to be an excellent over. Wicket, dot, dot, single and a dot. Clears the infield and finds the widest long off. A single to mark the end of the 14th over, 116 for 6. Only 2 runs and a wicket in that over. Yes, we would like to thank the entire sponsors associated with MACQUA State Premier League for their contribution towards this first season of MACQUA State Premier League. Thanks to Majestic Bhojan. Huge appeal. Appeal denied and they pick up a single. They are taking some risk at the stage which is not required at all. Thanks to Majestic Bhojan, Multi Cuisine Bar and Restaurant, Purvarim, Goa, Desserts and More, Events JNE Mumbai, Engine Enterprise Private Limited Mumbai, and Goa Health Monitoring Services. Overcast conditions again and making full use of it. The bowling team, Cancona Warriors. Play in a mess. Still a lot of time remaining in the innings. Just 4 wickets in hand. Down the leg side. They pick up a single.
and a single to Pundalik to get off strike. Chipped and chipped past the cover. Will be just a single. That single takes the score on to 118. 19. 119 for 6. Played off the back foot. Hitesh was looking for a single, but the ball was going straight to the cover fielder. Now the dot delivery. Good stop by the bowler in the follow through. Yes, restricting the runs here. The stage of the innings when batters look to score runs. Those runs have been plucked here. End of 15 overs, 119 for 6. And will be a change in voice on the microphone for the last 5 overs. It will be Krishna Devji. एक 119 पर 6 विकेट मैदान पर। हितेश मैदान पर स्ट्राइक पर। ओ सीधा शॉट को खेला। ओ थोड़ी सी बिल्कुल खराब, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात का। देखिए आपके पास उतनी काबिलियत है कि शुरू में माहौल लग रहा था ये टोटल 180 तक पहुंच पाएगा, लेकिन पीटर फर्नांडिस का वो गलत मौके पर शॉट, उसके बाद तो बिल्कुल जो सेट खिलाड़ी था वो भी बिल्कुल थोड़ी सी खराब बैटिंग, 40 रन की बैटिंग करके थोड़ी सी गलत शॉट खेला गया वहां पर। विद स्पिन खेलने का वहां पर प्रयास किया था, उससे पहले वहां पर विकेट निकले और एक शॉट जो रिवर्स का था, उस रिवर्स शॉट ने बड़े खिलाड़ी को आउट कर दिया। मतलब जो विकेट था, जो रुकना विकेट था, वो रुका नहीं और शायद वहां से सिलसिला चलता रहा मैदान पर। 6 विकेट निकल चुके, 19 पर 100। ओ अच्छा डिफेंस मैदान पर, बहुत सुंदर। 145-50 अगर बन सकते यहां से, मैं कहूंगा 160 बनने चाहिए मैदान पर। 4 ओवर बचे, अगर 2-4 शॉट अगर बनते तो 160 की तरफ आप रुक कर सकते इस मैच में। शॉट गेंद को पीछे हटकर कट किया, शॉट मिड ऑफ का खिलाड़ी अंदर है, वहां से रन नहीं मिलेंगे। बढ़िया माहौल मैदान पर। ठीक है, अभी तक 4 गेंदें डाली है, कोई रन नहीं खर्च किया मैदान में। 119 टीम का स्कोर। ओहो, इस बार हवाई यात्रा में गेंद बहुत दूर जाकर गिरी है। मैकवा सिक्सर मैदान पर, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। देखिए थोड़ा सा फ्लाइट दिया, ऊपर दिया इस बार गेंदबाज ने, दाव नहीं बता दिया खेलने का। देखिए ऊपर क्या, ऊपर गेंद को घुटना टेका, वो सीधा खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से। 6 रन। फिर से ऑन साइड पर कलयों के सारे मुड़ा, मैं लॉन्ग ऑन पर 1 रन वहां पर निकला। थोड़ी गपलत वहां पर, थोड़ी ढिलाई, मैं कहूंगा ढिलाई को देखा वहां पर। फील्डर थोड़े से सुस्तीले नजर आए वहां से और 2 रन निकले। आखिरी 2 गेंदों पर निकले 8 रन मैदान में। कारवा चला 127 रन का मैदान पर। खेल समाप्त हो चुका है 16 ओवर का। 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 127, 6 विकेट के नुकसान के बाद तब जो टीम बिल्कुल पहले बैटिंग करी इस मुकाबले, बहुत लाजवाब ये खेल मैदान पर। और कहीं ना कहीं हर वक्त प्रेशर। काई वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। सामने से कानकोन वॉरियर्स टीम को दावत दी इस वक्त बॉलिंग की, और कानकोन टीम ने कुछ कमाल का ही काम किया मैदान में। 16 ओवर डाले, 6 विकेट, 127 रन खर्च हो चुके। लेकिन अगर तुलना की जाए तो हितेश है मैदान में। ओहो हो, उड़ाया 6 रन के लिए मैकवा सिक्सर मैदान पर।
ओह, लेग स्टंप पर एक वाइड बॉल, वाइड के साथ 134 पर पहुंचा टीम का स्कोर। ओह, बढ़िया क्रिकेट वहां पर, पुंडलिक के बल्ले से निकला वो सिंगल, सिर्फ दिशा दिखाई वहां पर। हितेश रहेंगे स्ट्राइक पर। ओ, इस बार तेज शॉट खेला, मिड ऑफ पर खेला, ओ आगे निकल चुके, मौका रहेगा, मामला बहुत करीब है और ये आउट मैदान पर। सुसाइड केस, किसी भी पुलिस थाने में इसकी दर्जी होगी नहीं, क्योंकि अपने आप में उन्हें सुसाइड कर दिया और कोई भी उसकी गवाही नहीं देगा, सिर्फ अंपायर के सिवा आउट का इशारा। सिंगल निकला मैदान पर, तेजस के बल्ले से निकला सिंगल मैदान में। 7 विकेट के बाद 135 मैदान पर, हितेश का सुसाइड केस मैदान पर। फिर से वही गलती करने का प्रयास किया वहां पर पुंडलिक ने। 136, 7 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर ऑन साइड पर, देखिए हुक मारना पड़ेगा इस शॉट पर। तेज तेज थ्रो, तेज थ्रो, बहुत तेजी के साथ थ्रो किया गया, 1 रन निकला। टीम का स्कोर 17 ओवर के बाद 137, 137 पर। देखिए जर्सी नंबर 4 पहनकर सामने टीम कानकोन की टीम में अजीत है। अजीत टेनिस बॉल में बहुत लाजवाब बैटिंग करता है, सिर्फ टेनिस में, लेजर में भी कमाल की बैटिंग करता है ये। और अजीत आपका भी स्वागत इस खेल के दरमियान। अजिंक्य मैदान पर, अजिंक्य जो कि बिल्कुल अब मिड ऑफ पर, अब लेग स्लिप पर है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़ा है अजीत। अजिंक्य मैदान पर देखिए काम बहुत बड़ा है इस खेल में। पुंडलिक के साथ तेजस मिलकर इस वक्त बाहरी संभालेंगे। 18 गेंदों का खेल मैच में अभी तक बचा हुआ इस मुकाबले में, और कहीं ना कहीं दबाव का वो स्थिति, वो प्रेशर मैदान में वो बन के चलेगा इस खेल में। ओ शॉर्ट पिच गेंद, अजिंक्य के घर से गुजरी है, लॉन्ग लेग सीमा पर, ओ फील्डिंग कमाल की मैदान में। शायद नहीं, वहां पर 2 रन बनने थे मैदान पर, 1 ही रन वहां पर बना। बहुत सुंदर फील्डिंग मैदान पर। कमाल की फील्डिंग मैदान में, 1 रन वहां पर तेजस जो कि पहुंचेगा स्ट्राइक पर। और इस बार सीधा खेला, तीर की तरह के निकले, गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर निकल चुकी है, उतनी बढ़िया फील्डिंग। इक्का दुक्का बनने के बाद टोटल स्कोर में तब्दीली।
139 पर पहुंचा। ओ इस बार मिड विकेट सी मारेगा, बार गैप में गेंद खेल चुके हैं, गेंद मैक्वा चौवे के निकल चुके हैं। मिड विकेट सी मारेगा से पार, मैक्वा चौवा मैदान पर। ओह, कदमों का सवाल क्या वहां पर, और ये आउट। तनिष तेंदुलकर मैदान में पहुंच चुका है साथ देने के लिए इस वक्त तेजस का। खेल चलता हुआ 43 का 143 का, और अगर बात बताई जाए तो यहां से अभी तक इस ओवर के बाद 2 ओवर बचे। अभी तक 14 गेंदों का शायद खेल यहां से बचा। ओह, अच्छी गेंद अंदर की तरफ, बहुत तेज आ गई, बहुत तेज गेंद आ गई वहां से। ओह, बढ़िया गेंदबाजी, डॉट गेंद निकली और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 143 पर। इस समय पर खेल समाप्त हो चुका है 18 ओवर का मैच में। नया गेंदबाज सुधाकर मैदान में पहुंचेगा, स्ट्राइक पर पहुंचेगा इस वक्त तेजस मैदान पर। 12 गेंदे बचे। ओ इस बार कवर बाउंड्री के बाहर गेंद निकले, तेज शॉट, शायद रोका जाएगा तो बिल्कुल नहीं। मैक्वा चौवा मैदान पर निकला, सीमा रेखा से बाहर, 4 रन के लिए। ओह, बढ़िया शॉट वहां पर ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग पर। ओह, खराब फील्डिंग, और खराब फील्डिंग का परिणाम ये दूसरे के लिए कॉल होना था मैदान पर, लेकिन वहां पर एक ही रन बना। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 148। 8
एक रन वहां पर निकलता हुआ। वन 149 पर पहुंचा टीम का स्कोर, 8 विकेट नुकसान के बाद। तो चला ये बल्ला, आक्रमण कीजिए मरना है मैदान पर, आखिर के कुछ ओवर्स बचे। ओ इस बार बहुत दूर जा रही गेंद, और गेंद जाकर गिरी बिल्कुल मैदान के बाहर। मैक्वा सिक्सर मैदान पर, 155 पर पहुंचा टीम का स्कोर। देखिए शॉट, देखिए क्या वहां पर शॉट बिल्कुल खराब नहीं था, ताकत थी, टाइमिंग अच्छी थी, गेंद में कोई उतनी खराबी थी, लेंथ उतनी खराब नहीं थी, लेकिन क्या वहां पर टाइमिंग क्या गेंद को, बहुत दूर 100 मीटर के लगभग आसपास से जाकर गेंद गिरी है। एक 155, क्या टाइमिंग था वो, 8 विकेट नुकसान के बाद। ऑफ टर्न के बाहर कट किया, वो सिंगल निकलेगा। ओ थोड़ी खराब फील्डिंग, और मैक्वा चौवा मैदान पर। दो पैरों के बीच की जो गैप थी ना, वो बहुत ज्यादा थी, उससे भी शायद कम गैप होती तब भी चौवा था ये, इतनी खराब फील्डिंग मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट, फिर टीम के कप्तान की तरफ गेंद जा चुकी है। अब कप्तान वापस तेज आ गया भाई, 10 नंबर की जर्सी पहनकर खड़ा था कप्तान, और अमूमन कप्तान से उम्मीद होती नहीं कभी, लेकिन क्रिकेट है ये, क्रिकेट में जो हो नहीं सकता ना वो होके दिख जाता है। एक रन और निकला, टीम का स्कोर 160 रन पर पहुंचा, और खेल बिल्कुल बदला यहां से। आखिरी 6 गेंदों का खेल मैदान पर। वापस खेल, ओ फुल टॉस गेंद, टाइमिंग कड़ा गई है गुरु खेल। गेंद सीमा लगे से बाहर, 6 रन के लिए। आखिरी 3 गेंदों में 13 रन निकले, 2 छक्के निकले वहां पर। एक 167 हमने भाकित किया था, 170 तक पहुंचेगा ये खेल, उसकी तरफ अग्रस्थान पर है ये टीम मैदान में। शॉर्ट पिच गेंद, एक प्रहार अच्छा है, लेकिन उतनी टाइमिंग ठीक नहीं है। अगर शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा शॉट लगता तो फायदा। एक अच्छी गेंद थी, बल्ले पर लगी, शायद थोड़ा सा अगर गेंद दूसरी ओर निकल जाती थोड़ी सी लेफ्ट हैंड पर, तो शायद वो चौवा था मैदान पर। 167 मैदान पर, 67 100। लिखिए एक शॉट आपको 70, दूसरा शॉट आपको 80। तीसरा शॉट 90 के लिए, मतलब अगर 3 शॉट लगते 90, 2 शॉट आप 80 तरफ जाएंगे। उम्मीद यहां से एक तो बनना चाहिए। 4 गेंदें बची स्केल की, 2 गेंदों में 7 रन निकल चुके हैं मैदान पर। आखिरी का स्पेल है ये, आखिरी का और है ये स्केल में। पिच ऐड करो, सही शॉट जहां पर सिंगल निकला, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज को स्ट्राइक दे दी वहां पर। अब 3 गेंदें बची है, सेट खिलाड़ी है तेजस मैदान पर। 8 गेंदों में 25 रनों की एक तोड़फोड़ बैटिंग मैदान पर, जो उम्मीद थी कल के दिन पर। देखिए शाम के सुगामे पर आखिरी 12 गेंदों में 40। गोवा पुलिस का खिलाड़ी है तेजस। अरे उसने तो शायद दबंग ऐसा खेल रहा है बल्लेबाजी में, निर्भयता। बहादुर खिलाड़ी मैदान पर, बिल्कुल माहौल अच्छा। 3 गेंदें बची स्केल की, क्या एक बड़ा शॉट तेजस के बल्ले से देखने को मिलेगा?
चलिए वहां पर बल्ले पर लग गए विकेट कीपर के दस्ताने में 9 विकेट के नुकसान के बाद शायद ये देखिए विकेट कीपर थ्रो किया था वहां पर, शायद तो पहले झुक गए वहां पर। देखिए कहां पर क्या हुआ, ये देखिए बिल्कुल बॉलिंग करे आप, ये देखिए झुक गए वहां से, वो देखिए ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ा वहां पर बल्ले पर अंदरूना, हम कहते हैं ना बहुत बार महीम सा ऐसे लगा वहां पर आउट मैदान पर। गोवा पुलिस का और एक जहाबाज खिलाड़ी सर्वेश सहदेव कांदोलकर, इस वक्त सहदेव कांदोलकर देखिए जैसे कोरोना आया था तब से लेकर हम बहुत बार कह चुके हैं सिर्फ भाई झाड़ू पोछा लगाने वालों का काम नहीं, पुलिस दल के कार्य के खिलाफ, पुलिस दल में जो इतने भी खिलाड़ी अब कार्यरत हैं उन्होंने बहुत सा काम किया था उस समय पर। टीम का स्कोर पहुंचा 168 मैदान पर। ओह शॉट देखिए, ये कमाल का शॉट है, सूर्य कुमार यादव की कुछ झलके देखने को मिली शॉट में, ऑफ टर्न के बाद से स्वीप किया वहां से, चौवा निकला 172 पर, मतलब जो फाइटिंग टोटल है ना 160 65 का, उससे ऊपर एक कदम आप पहुंच चुके, 170 172 में पहुंच चुके। हमने शुरू में कहा था 2 शॉट आपको 180 तरफ लेके जाएंगे, और अभी भी अगर एक शॉट लगता है तो 180 के आसपास ये गुजरेगा खेल मैदान पर। क्या कमाल का खेल मैदान पर आते ही बिल्कुल दबंग खिलाड़ी, दबंग की ताज स्टाइल में अंदाज दिखाते हुए। ओ चलिए ये आखिरी विकेट है, ये नहीं वहां पर एक ही रन मिलेगा। 173 पर पहुंचा टीम का कारवा मैदान पर, 22 के रुपए रन मिलता मैदान पर। काई वॉरियर्स टीम ने पहले टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। कानकोन वॉरियर्स टीम को कहा आप शुरू में बॉलिंग कीजिए मैदान पर। बॉलिंग करते कानकोन टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर खर्च किए 173 रन मैदान पर, और अब जिससे पीछे कानकोन टीम वॉरियर्स टीम को बनाने पड़ेंगे 174। हमारे साथ जुड़ जाएंगे सर तुषार। Second inning will commence at 11:15. So both the teams kindly make a note. Second innings will begin at 11:15.
174 is the target set by Qayi Warriors after batting first. And 174 will be an uphill task because this surface we have seen yesterday, how things have changed. The ball, certain balls have been keeping low from a particular length. You never know. Cancona Warriors were thinking to restrict the opponents under 150 when the team were 114 for 6 at one stage in the 14th over. But thanks to a brilliant inning by Tejas, well supported by Pundalik, and a good captain's knock that helped them to power the score. It was a good partnership of 77 or 55 runs for the third wicket between Manish Kakode and Peter Manish, playing a very important role, leading the team to a good total, scoring an unbeaten. In fact, he was dismissed on 51. Vasu Tiwari, and along with Vasu Tiwari it will be Viraj Puranik along with Vasu, the captain, opening the innings. 174 is what they have to chase to enter the semi-finals. The two semi-finalists yesterday, it were Purvaram Institute of Cricket and then Priority Titans. What a season it has been for Priority Titans, winning the Panjim Gymkhana Members League, winning the Goichi League, and now into the semi-finals of this MACQUA State Premier League. Mukhtar Qadri is having a very good time in this calendar year of 2025. Also winning the Veterans Cricket Tournament. Viraj Puranik will be on strike. At the non-striker's end is Vasu. Tejas to start the proceedings. Ace bowler for Goa Police, along with the Avinash Gavas. A tall fast bowler. Very handy all-rounder. We have seen what he has done already when he was having the bat in his hand. I think Qayi Warriors will be pretty happy with the way things have gone in the first innings. After being 114 for 6, they have managed to get 173 in allotted 20 overs. In the afternoon, the last quarterfinals will be played between Korlim 11 and Chaugule Sports Club. It will be another electrifying match. It will be Sahil Duri versus Darshan Misar. Well played. Looking for a quick single. Shy the stumps, misses it. And good backing up. Viraj gets off the mark with a single and brings Vasu at the striking end. As far as Cancona Warriors are concerned, they have created the biggest upset in this tournament, beating Bharat Arkas Stars in their very first match. A bunch of good cricketers in the lineup. Banged in short and cuts it, slices it for a boundary. Just using the pace from Tejas, Vasu gets off the mark with a MACQUA boundary. That has been the difference between the two teams. You could see in the first innings, Jagdish Patil not providing any width for the openers
bowling stump to stump line, and already you can see a width being provided in the very first over by Tejas, cashing in with a boundary here with Vasu. Score moves on to 5. You might have pace, but your line and length has to be perfect. Yes, that is the line. Samir Sawant in the gully will cut it off. That single takes the score to 6, brings the captain at the striking end. Wrapped on the pad, wicket keeper not able to stop the ball. And looking for the second here. He'll get it comfortably. Score moves on to 8. Leg by call by the umpire. It's turning out to be a very handy first over. 8 without loss. Good leave by Viraj here. They have already got 8 runs, chasing almost at 8.7 runs per over. Just guiding the ball in the gap. Will be a single to wrap up the very first over. It's 9 without loss. Cancona Warriors chasing 174 to win. Pundalik starting the over. Good leave by Viraj. Was expecting a wide call by the umpire, but very well experienced 2 umpires. Prashant Gadekar sir and Sababani. Getting underage and goes for a boundary. Second MACQUA boundary of the innings. Not in scintillating way, but will get a boundary though. Dot ball and then a boundary. They have been picking boundaries every over. This will certainly keep them in the run chase. For Cancona Warriors, they need a good start. First 6 overs in the power play. If they can even get 48-50 runs without losing any wicket, it will be a very good start. Because in run chase, you need wickets at the end of the innings. Oh, good bounce here. Pundalik making good use of his height. Getting nice bounce from the surface. And that boundary earlier in the over has brought a change in field. You can see Samir Sawant
in the third man region. Pundalik, the under 19 captain, showing his talent over there. Another great delivery, but this time too much wide outside the off stump, being penalized by the umpire. First wide of the innings. That wide takes the score on to 14. Full length and just beating the outside edge. Very well bowled. Late movement for Pundalik. You could exactly see what happened in the action, the replay. The ball pitching on the off stump and just deviating. Well bowled by Pundalik. Pulled away and misfilled. It should have been a dot delivery. And they get a single. Score moves on to 15. Without loss. Second over in progress, chasing 174. Vasu marking his guard. Already scoring a boundary in the very first over, Vasu Tiwari. Charging down the wicket into the mid-on, a quick single straight to Sahadev Kandolkar in the mid-on. That marks the end of second over. It's 16 without loss, going at 8 runs per over. What a shot this has been by Vasu. A MACQUA boundary have been earned very first ball of the third over. Just looking to keep the ball aerial over the infield. Exquisite timing again by Vasu. Third MACQUA boundary of the innings. They have been scoring boundaries at regular intervals. And definitely keeping them in the run chase. They are hunting for boundaries. Oh, clean him up. Vasu has been dismissed here. The bowler having the last laugh. So Vasu's stay at the crease comes to an end. It's 20 for 1. Mayur to replace Vasu.
Qayi Warriors picking up the first wicket. In order to qualify for the semi-finals, they will have to pick up wickets on regular basis. Try to bowl the opposition before the chase 174. Tejas striking in his second over after conceding a boundary, just pulling his length back. And Vasu was charging down the crease, just missing the length of the delivery completely and was castled. Oh, great delivery. Excellent delivery by Tejas. A dot ball. That is what wicket does. It dries up the run flow. Now the fielders may have to make sure that the new batter Mayur is not being given easy singles. Well played again, straight to the fielder. Good pace of fielding. This is poor. Now that has resulted in a run. It should have been a dot ball. That will allow Mayur to get off the mark. Oh, the ball is up in the air. This will be a simple chance. And Viraj, the captain, has to depart. A poor shot selection by Viraj. It was not required. They had already got boundary of the very first delivery, after which Vasu had been dismissed. And now Viraj looking to go over the covers, getting a leading edge. The ball ballooning up in the air and a safe catch. So Viraj has to depart as Tejas provides a double breakthrough in his second over. 21 for 2. Sujit, can you repeat the show that he provided against the Dhar Arkas Stars? The man of the match against Dhar Arkas Stars. The team require a big contribution from Sujit, having lost both the openers inside the power play. Just the third over of the innings, and Cancona Warriors are 21 for 2, chasing 174. They have to forget what has happened until so far and have to concentrate on the future now. Well struck, but straight to cover. Couldn't find the gap. Sujit, a dot delivery to mark the end of 3 overs. It's 21 for 2. Cancona Warriors chasing 174. They were motoring on nicely, 2 overs 16 without loss. But second over for Tejas, a boundary of the very first delivery, then a wicket of Vasu, then a couple of runs, and then the big wicket of Viraj, the captain, resulting in only 5 runs and 2 wickets from that over. Pundalik to continue, bowling from the come box end. Mayur and Sujit.
Have to make sure they don't lose further wickets in the power play. Well played. Getting the body behind the ball. They have to consolidate the inning now, having lost both the openers in the first 3 overs. Oh, the ball slightly keeping low, looking for the run out in the follow through. It was very difficult to maintain the balance of the body as well as to get release the ball onto the stumps. Everything within splits seconds was not that easy for Pundalik, and they managed to scamper through a single. Score moves on to 22 for 2. The best chance here for Qayi Warriors to slow things down, get the required run rate to go past 10. Yes, another dot ball has been sneaked. Pundalik bowling a perfect line in length. Oh, lovely shot to ease the pressure. Straight over the umpire's head this time, bisecting the mid-off and mid-on. Another MACQUA boundary. They have been scoring boundaries, but they have also been losing wickets. That has been their problem. I would like to thank all the sponsors associated with MACQUA State Premier League Season 1. Majestic Bhojan, Multi-Cuisine Bar and Restaurant, Purvaram, Goa, Deserts and more. Events Genie, Mumbai. Engine Enterprises Private Limited, Mumbai. Goa Health Monitoring Services. Oh, looking to chase that away going delivery, looking to poke at it. And a dot ball. Sujit scoring that boundary to get off the mark. Just trying to continue from the form that he has left in the previous match. And if Sujit stays at the crease, runs will start to flow. Again overpitched and goes aerial and has gone the distance as well, half a dozen. MACQUA 6, a first MACQUA 6 of the innings for Sujit. He had no intentions to keep the ball down, and 6 to finish the over. A very handy over, 32. 11 runs coming from the fourth over, 32 for 2. Cancona Warriors chasing 174. Yes, already we have seen 4 boundaries and 1 6 in this innings. In the run chase, Tejas into his third over. Bowling from office bearer end of GCA. Tejas picking up 2 wickets in his previous over. That is why the captain must be interested in keeping him with another over. Short ball carved away into the deep point. Sardev Kandolkar. A single has been picked up. 33. Sujit and Mayur nicely motoring with this partnership.
Six and a boundary in the previous over. Floodley, and then this time has gone through the gate. Third wicket. And the captain's decision to give another over to Tejas have worked here. They have got rid of the dangerous batter Sujit, who played a match-winning knock in the previous match, has to depart early today. Right on the back foot, Cancona Warriors chasing 174. They are 33 for 3. To replace Sujit, we have Rahul Mehta. Ranji cricketer. He will have big responsibilities on his shoulder walking at the crease. Not only to score runs but also build a partnership. What a delivery it was by Tejas. It was pitched up, allowing Sujit to go through the drive, but just a late movement by the ball, completely beating him and castled his stumps. "33 for 3. Tejas with the figures of 3 for 13 into his third over. What a cameo it was with the bat. And that confidence can be seen on the bowling as well. Oh, what a delivery to surprise Rahul. He's getting a good purchase from the surface. Nice bounce and carry to the wicket keeper. A tough conditions here for Rahul, having seen 3 wickets falling in the first 5 overs of the innings. Short ball played in the covers, quick single. And Rahul gets off the mark with that single. Score moves on to 34. For 3. Another 140 required with 7 wickets in hand. 92 deliveries remaining. 92 balls, 140. Well played mid off. Will cut it off. Will be another single. Yes, that is what they need to look now. Try to rotate strike. Try to milk the bowlers. Even if you get 5 to 6 runs for next couple of overs, it will do, but it will also help in building a partnership. You can always capitalize later on when you have a good partnership building up. Oh, what a shot this is on the onside. It will be a half a dozen. MACQUA 6 to end the over. Completion of 5 overs. It's 41 for 3. First MACQUA 6 for Rahul Mehta. And
Another change in field, another change in bowling here. First change, in fact, in the bowling. Sahadev Kandolkar, spin being introduced. The captain is having a variety of options. He has handed over the ball to Sahadev. The first bowling change that we have seen, bowling from the combox end. Rahul getting the first 6 of his innings. Bowling from the combox, Sahadev Kandolkar with his left arm orthodox. If you look at the field position, still this is the final over of the power play. They have the gully, cover, mid-off, mid-wicket and backward square leg. Well bowled and good stop by Sahadev. He is a very good fielder of his own bowling. Short fine leg in position as well. This is the field setup in the 30-yard circle. Widest long on. This time mid-off. Oh, chance of run out and a throw very wayward. They have the sweeper cover and long on outside the 30-yard circle on the fence. Smart cricketer Sahadev Kandolkar. They will scamper through a single. 42 for 3. Rahul has already showed a matured inning here, having lost 3 wickets, not looking to take any risk. The loose ball has been dealt away. Tossed out below, full toss, and misfield will allow a single to Rahul. They have a wide range of options. Manish Kakode with his leg break, very effective in the middle overs. He has the knack of picking off wickets in the middle overs. A quick fire delivery and has been placed in the gap. This will race on this outfield. Another exquisitely timed boundary by Mayur. MACQUA boundary coming from the bat of Mayur here. Width was provided by Sahadev and cashing in, going through the drive. Quicker delivery again and will be a dot ball. End of the power play. 6 overs have been bowled. Cancona Warriors are 47 for 3, chasing 174. I would like to take this moment to thank all our sponsors associated with MACQUA State Premier League, Majestic Bhojan Multi-Cuisine Bar and Restaurant, Purvarim, Goa, Deserts and More Events, Genie, Mumbai, Engine Enterprises Private Limited, Mumbai, Go Health Monitoring Services. Thank you once and again for a valuable contribution towards MACQUA State Premier League, organized by MACQUA Services Private Limited, dealing in data fiber cable laying, digital marketing and financial services, having their branches in Goa, Karnataka and Maharashtra. Manish Kakode. So spin from both the ends. He will quickly look to get in the groove. Bowling to Rahul Mehta. Well struck in the long off. (48 for 3). It brings Mayur. Oh, well played the ball, having a sharp turn over there.
that will make the batter think twice before he selects his shot. He will have to play on the merit. Watch the ball, play the ball. He cannot play premeditated shots against Manish. Oh, that is what he looks to do. He looks to play against the spin and Manish strikes. That is what I have been talking about. He has a knack of picking up wickets in the middle over, and exactly the same thing has been provided here by Manish Kakode. Poor shot selection by Mayur. He was thinking already that he will play a sweep shot against Manish Kakode, and that proved to be wrong. They have lost 4th wicket now. 48 for 4. The same stage what priority Titans were yesterday. But they were batting first on that occasion here. Cancona Warriors are chasing. They have been blown away by Qayi Warriors in the first half of the first run chase into the 7th over, and 48 for 4. Qayi Warriors couldn't have asked anything better, having 4 wickets down in the first 7 overs of the opposition. You better Anuj. I think Rahul Mehta needs to tell his partner. He needs to keep on talking with his partner in between overs, because they are in search of a partnership. Forget about the required run rate at this stage. You would see hardly any partnership developing. Well played, carved away into the sweeper cover. I think there might be competition between Manish and Tejas if they win this match for the man of the match contender. Oh, well bowled. Oh, keeper missed it. He was out of his crease. Peter Fernandes, what have you done? He was way out of his crease. It would have been 5 down. It would have been the wicket of Rahul Mehta. And now they can run that single. Peter Fernandes will be kicking himself for missing that opportunity. It would have been 2 wickets for Manish Kakode in his very first over. And getting into his groove very early. First over, he picks up a wicket and concedes only 3 runs. 50 for 4, completion of 7 overs. Cancona Warriors chasing 174, requiring another 124 to win in 78 deliveries. And there is a change in voice on the microphone for the next 7 overs. It will be Krishna Devji. ओ इस बार सीधा खेला तीर की तरफ, लॉन्ग ऑफ सी मार्ग से जाकर बिन बैनर पर टकराई मैकवा चौवा मैदान पर। चौवन पर पहुंचा टीम का स्कोर इस समय पर इस खेल में मैदान में 4 विकेट निकल चुके हैं। देखिए आप खेल वो सवाल है इस वक्त विकेट का, विकेट पर आपको कितना देर खड़ा रहना पड़ेगा, ये सबसे अहम बड़ी बात मैदान पर। डाउन द ग्राउंड फिर से अटैक किया, वहां पर गेंद को खेला सीधा लॉन्ग ऑफ की तरफ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, गेंद को रोका जाएगा, 1 रन वहां पर बनता हुआ
सीधे पीटर फर्नांडिस के झोली में गिरने के लिए विकेट कीपर जो काम कर रहे हैं मैदान पर। और इस बार सीधा खेला। देखिए कितना फर्क पड़ेगा आपको, टीम के पास अगर विकेट बचते हैं तो किसी भी समय पर अटैकिंग वो बॉलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन गेंदबाजी में तब्दीली मोर्चे पर लेफ्ट हैंडर स्पिन गेंदबाज और ऑप्शन के बाहर कट किया गेंद को कवर बाउंड्री पर, कवर पर खिलाड़ी पीछे रखा, इसका मतलब एक रन वहां पर बन जाएगा। देखिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, एक और अगर अच्छा हो जाता है, टाइट हो जाता है, जहां पर 2 विकेट एक ओवर में गिर जाएंगे तो मामला वापस फंसेगा इस खेल में। अगर पार्टनरशिप 50-55 की बनती है जो पीटर के साथ बनी थी दूसरे खिलाड़ी की, तो वो माहौल अलग बनेगा मैदान पर, मतलब पार्टनरशिप सबसे अहम रहेगी। ऑन साइड पर सिर्फ ढकेला गेंद को। देखिए बैकफुट से खेलना ये पसंद करते हैं और अपने आप को बिल्कुल ढालते हैं, पता है कि इक्का दुक्का लेकर मैच को थोड़ा सा ले जाना पड़ेगा आगे मैदान पर। खेल अब चल रहा है मैदान पर, ये इस समय पर 8वें ओवर का इस मुकाबले का 57 पर पहुंचा, रन भी ठीक ठाक है। फिर से ऑन साइड पर खुद गेंदबाज अपने फॉल्ट भी जा रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फील्डिंग मैदान पर, डॉट के साथ ये खेल बिल्कुल चलता हुआ। सहदेव मैदान पर और समाप्त हो चुका है 8 ओवर के बाद अब 57। राहुल स्ट्राइक पर, ओ इस बार ऑन साइड पर स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए स्वीप किया वहां पे ऑप्शन के बाहर से राहुल ने, छक्का मैदान पर, मैक्वा छक्का। और साइड पर गेंद फ्लिक किया, गेंद को कदमों का शानदार इस्तेमाल किया, मिड विकेट पर खेला गया मैदान पर। देखिए राहुल का क्या कमाल का खेल मैदान पर। मैक्वा चौवा मैदान पर निकलता हुआ, देखिए क्या सुंदर टाइमिंग था, गति का इस्तेमाल किया वहां पर, लेट कट खेला गया इनको, 68 पर पहुंचा है टीम का स्कोर मैदान पर। क्या माहौल बना के रखा है इस खेल में। ओ फिर से बढ़िया लाइन वहां पर, अगर वो स्टंप निकाला जाता तो शायद ये हालात थोड़े बदले होते मैदान पर, थोड़े नहीं बहुत बदले होते। और फिर से ऑन साइड पर मिड ऑन पर खेला गया, डीप में प्रोटेक्शन नहीं था वहां पर, खुद गेंदबाज चले गए, अपने पैर हाथों में गेंद को रोका गया, 1 रन वहां पर और मिलता हुआ। 1 रन के साथ कारवां चला इस वक्त 174 का पीछा करती हुई 69 पर। अब राहुल मैदान में चलेगा, और डिफेंस देखिए बहुत सुंदर, खुद गेंदबाज की तरफ विकेट कीपर तक गेंद चली गई, डॉट के निकलती, एक बाउंड्री से में निकली, इसका मतलब है कि टीम का स्कोर और 2 बाउंड्री, एक छक्का एक चौवा निकला मैदान पर, एक बड़ा और निकला, 69 पर पहुंचा टीम का स्कोर
खेल समाप्त हो चुका है 9 ओवर का। देखिए सवाल था, जब पहले बैटिंग काई वॉरियर्स करी थी 100 माफ कीजिए 69 पर उनके 2 विकेट थे, और कानकोन वॉरियर्स टीम 69 पर 4 विकेट है। तुलना की तो फर्क सिर्फ 2 विकेटों का है, लेकिन ये तुलना अगर की जाए तो कानकोन टीम ने बाद में अच्छी बॉलिंग की थी मैदान पर। और इस बार ऑन साइड पर क्या टाइमिंग है ये। देखिए जब आवाज एक मधुर से सुर की आवाज, ये सुर देखिए, ये आवाज, ये धुन, ये सुर है, तो आप समझे किस फॉर्म से बल्लेबाज गुजर रहा है। कदमों का इस्तेमाल किया वहां पर, गेंद को ड्राइव किया गया था, अच्छा फील्डिंग वहां पर। 70 पर पहुंचा है कारवार टीम का मैदान में। देखिए माहौल कितना भी अच्छा हो, सबसे अहम बात है पार्टनरशिप। छोटी छोटी पार्टनरशिप ना आपको जीत के दरवाजे तक लेके जाएगी मैदान पर। और ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, कवर पर शायद उतनी बढ़िया फील्डिंग कवर पॉइंट पर एक रन रोका जा चुका है, एक रन वहां पर खर्च हुआ। देखिए इतना खूबसूरत का माहौल है ये। देखिए जैसे जैसे ही ये विकेट के बीच में पार्टनरशिप 15-20 की बन जाएगी, उम्मीद वहां पर ज्यादा रहेगी मैच में। और इस बार सीधा खेला मिड ऑफ पर। देखिए बैकफुट से वो टाइमिंग कमाल का रहता मैदान पर। गेंद को ऊपर किया, वहां पर फ्लाइट दिया। जानते हैं कि एक आध विकेट की तलाश करनी पड़ेगी, थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा मैदान पर, और वही काम कर रहे इस वक्त राहुल रहेंगे नॉस्टैक एंड पर, और अनुज स्ट्राइक पर। अंपायर बहुत बारीकाई से गेंद को देख रहे। क्या महीम सी दरार हो चुकी है वहां पर गेंद पर। कल एक गेंद टूट चुकी थी, हमारे रोहित सर ने जाकर वो गेंद को चेंज किया गया, लाकर वापस दिया गया। मतलब देखिए क्या वही वो थोड़ा सा कट शायद देखने को मिल रहा है गेंद पर। और ऑफ टर्न के बाहर कट किया गेंद को, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है। डॉट के साथ ये ओवर की समाप्ति पैदा हो चुकी है। खेल समाप्त हो चुका है 10 ओवर का इस मैच में, और टीम का स्कोर 71 रन पर।
अब सामने से राहुल मैदान पर स्ट्राइक पर रहेगा। मनीष इस वक्त गेंदबाजी के मोर्चे पर। देखिए सबसे अहम बात है ना कि यहाँ से काई वॉरियर्स टीम को चाहिए विकेट मैदान पर, और कानकोन टीम वॉरियर्स को चाहिए यहाँ पर एक पार्टनरशिप जो अभी तक अच्छी बन रही है मैदान पर। स्पिन को लगाया गया मोर्चे पर। ओ हो सीधा शॉट लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से पार, मैकवा छक्का। एक बड़ा शॉट राहुल के बल्ले से निकला। प्रेशर अब सामने से टीम पर आ चुका है मैदान पर। ओ फिर से ऑन साइड पर स्क्वायर लेग हम पर के ठीक बगल से लेग स्लिप का खिलाड़ी पीछे था, एक रन पर निकला। और जो जीवन दान मिला स्टंपिंग का, राहुल का जो स्टंपिंग राहुल को छोड़ा गया, वहां से मैच ने बिल्कुल रुख बदला। ड्राइव किया, कवर बाउंड्री पर, सुंदर टाइमिंग मैदान में। हम बहुत बार कहते हैं ना इस मैकवा चौवे को आप बिल्कुल इसका बिल्कुल फोटो खींचिए और वो फोटो लगाकर फ्रेम लगाकर घर में अपने बिल्कुल रखिए। कुछ उस तरह से शॉट था मैदान पर ये। एक शॉट चौवा निकला इस वक्त बल्ले से अनूप के। और फिर से देखिए, फिर से लेंथ को आप जब भी ऊपर करेंगे ना, अनुज छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है कि लक्ष्य तक बढ़ने के लिए आपको टोटल हो चुका है 82 पर टीम का स्कोर पहुंचा। अब 83 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ मैदान पर। बाउंड्री के बाद 82, उसके बाद सिंगल 83 पर पहुंचा। ऐसे रन हम वहां पर बन चुके हैं मैदान में। ओ ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, हाँ बिल्कुल गैप में, बता रहे वो गैप ढूंढ ना पाए मैदान पर। सरल मौका अनुज को कट मारने का था राहुल को मैदान पर, और राहुल सेट खिलाड़ी है। अभी तक राहुल की अगर बात बताई जाए तो 31 रनों की एक शानदार बैटिंग मैदान पर, और अनुज 13 रन पर। और फिर से ऑफ टर्न के बाद कट किया गेंद को, शॉट मिला, आपका खिलाड़ी अंदर था। देखिए ये मौके, ये छोटे छोटे जो मौके हैं ना, ये आपको लेने पड़ेंगे मैदान में। एक और रन निकला मैदान पर, और टारगेट की तरफ एक और रन बिल्कुल कम होता हुआ टीम का स्कोर पहुंचा 84 पर। खेल समाप्त हो चुका है 11 ओवर का। टीम का स्कोर इस मैच में 4 विकेट नुकसान के बाद। तब अंतिम खेल बचा हुआ 9 गेंदों, 54 गेंदों पर 90 रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे। राहुल पहुंचेगा स्ट्राइक पर। देखिए थोड़ी सी पार्टनरशिप, हम बात चलते हैं पार्टनरशिप के बारे में। बताइए पार्टनरशिप कितने रन हो चुके? एबी 25 के माध्यम से आपको यूट्यूब पर मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। ओके, अब इस गेंद के बाद आपको बताएंगे पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में कितने की हुई है मैदान पर। 36 रन की, 36 रनों की भागीदारी हो चुकी है मैदान पर। थैंक यू तुषार सर। देखिए सबकी नजरें हमारी तरफ है। सुंदर माहौल मैदान पर, ये मैच उतना ही करेगा, दोनों टीमों के लिए इंपॉर्टेंट मुकाबला ये। ओ हल्के हाथ से गेंद को खेला, वो सिंगल निकला। राहुल को देखिए इक्का दुक्का बीच में बाउंड्रीज लगे, हर ओवर में एवरी ओवर हर ओवर में बाउंड्रीज। एक भी ऐसा और नहीं गया जहां तक ये चौवा नहीं रखा गया। वहां पर स्टंप जहां पर छोड़ा
हिट वहां पर मौका था स्टंपिंग करने का, वहां उसके बाद कानकोन टीम ने पलट कर देखा नहीं पीछे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि लक्ष्य आसान होगा, अभी लक्ष्य बहुत दूर है। अगर 2-4 विकेटों में गुच्छों में गिर जाए तो मुकाबला हो सकता है। और बिल्कुल तेज गति का इस्तेमाल किया पर आखिरी समय पर बल्ले का ब्लेड खोला, गेंद निकली वाइडिश गली के बगल से, थर्ड मैन तरफ, एक रन वहां पर निकलता हुआ, एक रन के साथ रनों में इजाफा भी पहुंचा। टीम का स्कोर पहुंचा 86 रन पर 4 विकेट नुकसान के बाद। 38 रन की पार्टनरशिप, ये धीरे धीरे पार्टनरशिप जो बढ़ रही है मैदान पर, ये बढ़ती हुई पार्टनरशिप काई वॉरियर्स टीम के लिए न जाने संकट का मैसेज भेजती हुई। ओ कदमों का इस्तेमाल किया, डाउन द ग्राउंड, शपल किया, सीधा मारने का प्रयास वहां पर, डॉट निकलती हुई गेंद। इस बार सीधा खेला, टाइमिंग देखिए कमाल का, ये आवाज देखिए, शॉट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच था। अगर बीच में गेंद लगती है ना, बीचों बीच गेंद बल्ले के, तो आपका फॉर्म ये दर्शाता है मैदान पर कि आप बहुत अच्छे फॉर्म में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बल्ले पर कहाँ गेंद लगती है, उससे आपको पता चल जाता है आप किस फॉर्म में नजर आ रहे। और वही देखिए राहुल ने बहुत सिंगल निकाला, राहुल और अनुज की जोड़ी मैदान पर। ओ सीधा खेला गेंद को, लॉन्ग ऑन सी मारेगा से बाहर, 6 रन के लिए मैक्वा सिक्सर मैदान पर। ओह अच्छी लाइन मैदान पर, लेकिन एक बड़ा शॉट लग चुका है इस ओवर में, वो सिक्सर के साथ 93 पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल समाप्त हो चुका है 12 ओवर का। नया गेंदबाज तनिष मैदान में पहुंच चुका है। तैतीस गेंदों पर 45 रन की भागीदारी, क्या कमाल की बैटिंग मैदान पर। ओ कट किया गेंद को पॉइंट पर, वो सुंदर फील्डिंग वहां पर, एक रन वहां पर निकलता बाप। ठीक है, तारीफ करनी पड़ेगी राहुल और साथ साथ उस वक्त अनुज की, जो अनुज अब स्ट्राइक पर पहुंच चुका है। राहुल एक तरह से अटैक कर रहा है, अनुज थोड़ा सा रुक कर खेल रहा है। देखिए कंसंट्रेशन, मतलब एकाग्रता की कमी नहीं है अनुज के पास है। जब सामने वाला बल्लेबाज अटैक कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो नहीं करना है जो शुभमन गिल ने कहता रोहित साथ मिलकर वर्ल्ड कप में अपना विकेट दे देता। ओ अच्छा क्रिकेट, फिर से गति का इस्तेमाल किया, गेंद थर्ड मैन सी मारेगा से पार, 4 रन मैदान पर। मैक्वा चौवा मैदान पर, 50 रन की पार्टनरशिप इस जोड़ी के बीच में, उसके लिए भी तालियां बजाइए। ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मैदान पर। और टोटल स्कोर 98 पर पहुंचा।
अब सिर्फ विकेट की तलाश करनी पड़ेगी, विकेट ही क्रिकेट में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे। वाइस से फिर से वही पर खेलेगा थर्ड मैन पर। अब खिलाड़ी को चेंज किया गया, वहां पर 3-3 था वहां पर खिलाड़ी, अब शायद उनको बदला गया। देखिए वहां पर हम कहते हैं ना, क्रिस गेल 3-3 कभी जिंदगी में 3 रन दौड़कर नहीं निकालेंगे, लेकिन सिंदूर का गोवारा जो ऐसा एक खिलाड़ी है सरम सागाकर, जिसने टेनिस बॉल में कभी भी 3 रन दौड़कर एक बार निकाले, जब आखिरी गेंद पर 4 रन जिससे पीछे देवगढ़ में थे तब निकाले 3 रन दौड़कर, सुपर ओवर किया था। ऐसे कुछ रिकॉर्ड है। और इस बार सीधा शॉट, टाइमिंग कमाल का, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनेगा। थ्रो सीधा हाथ में, जोखिम शायद थोड़ा सा खराब, अगर थ्रो सीधा हाथ में आ जाता तो मुश्किल था। वहां पर 100 रन मैदान पर बन चुके टीम के। ओ आखिरकार ये रिएक्शन सब कुछ बयां कर रहा है, विकेट निकला मैदान में। ऐन मौके पर सबसे खतरनाक खिलाड़ी राहुल 37 रन की एक बाहरी आउट मैदान पर। अब राहुल लौट चुका है और नया बल्लेबाज मैदान में पहुंचा। सुधाकर भोसले मैदान पर, जैसे नंबर 5। और इस बार सीधा खेलने का प्रयास किया, वहां पर बल्ले पर निचली से लड़खड़ाती हुई निकली शॉट मिड ऑन पर, 1 रन वहां पर निकला। 1 रन के साथ टोटल स्कोर 102 पर पहुंचा। अब खेल समाप्त हो चुका है, अंतिम 13 ओवर का, 7 ओवर का खेल बचा है और 7 ओवर में नीतीश सर बताइए जिससे कितने रन पीछे बढ़ेंगे? 72 रन, जिससे पीछे 72। सहदेव अपने निजी कोटे का अंतिम ओवर 3 ओवर सदन डाले, 15 रन, कोई सफलता नहीं अभी तक नहीं। क्या इस ओवर में 1 विकेट सहदेव के खाते में? ओ तेज क्या गेंद को अंदर आती गेंद को कट किया, गेंद को 1 रन वहां पर निकलता। 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 103 पर। सुधाकर भोसले ने खाता खोला अपने खाते में इजाफा करते हुए 2 रन पर। ओ लेट कट खेलने का प्रयास किया, पर एक चित्र विचित्र शॉट मैदान पर,
ठीक है, घुटना टेका आखिरी समय में बल्ले का मुंह खोलने का पर इसका डॉट के निकलते हुए। ओह बढ़िया गेंदबाजी। ओ थ्रो थोड़ा सा खराब निकला लेकिन एक ही रन वहां पर बनेगा। ओहो हो उड़ाया मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए मैकवा सिक्सर। सुधाकर के बल्ले से निकला वो छक्का मैदान पर। ओह लाइन देखिए बहुत सुंदर मैदान पर डॉट के निकलती हुई। ओ इस बार कवर और लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल बीच में से क्या खूबसूरत टाइमिंग है ये। 6 रन मैदान पर मैकवा सिक्सर मैदान में और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 116। 2 ओवर में 3 ओवर में 15 रन खर्च किए थे और आखिरी के ओवर में 2 छक्के लगे, एक सफलता भी नहीं वहां पर। 14 रन का निकला और मतलब टोटल 29 रन खर्च किए आखिरी 4 ओवर में इस खिलाड़ी गेंदबाजी में। टीम का स्कोर 116 पर पहुंचा। अंतिम खेल बचा हुआ खेल इस समय पर 36 गेंदों का, 36 गेंदों पे जीत से पीछे। सर बताएंगे स्वागत इस समय पर। Thank you, Krishna. What a roller coaster kind of an innings this has been. They were down with the first 4 wickets that were picked up. They were pushed back to the wall after losing those 4 wickets for 48. And then what a partnership of 53 runs between Rahul Mehta and Anuj. And now Sudhakar Bhosle looking like a sword of Chhatrapati Shivaji Bhosle in his hand rather than the bat. Carved away into the gully, picks up a quick single, shy the stumps. The fielding has been very wavered. You can see a couple of chances missed out due to poor throw. One underarm throw over the wicketkeeper, one overarm throw over the wicketkeeper. There were opportunity for 2 run-outs. One stumping missed by Peter Fernandes of Rahul, who would have been dismissed very early. This all thing counts in cricket. Misham shot will get a single though. Sudhakar, as he hasn't wasted any time, Sudhakar Bhosle. Ever since he has come at the crease, he has started the fireworks. He knows the required run rate is just climbing up, and to pull things back, he needs to hit some big sixes, MACQUA boundaries, and has been delivering those. Slow bouncer attempted and has been whacked away. Another MACQUA 6. They are just feeding the batters. The batters are being just fed away with those deliveries to be put away for MACQUA boundaries and MACQUA 6s. Not learning from the mistake that they have been doing. They are repeating the mistakes. Score races to 124 for 5. Just 50 required now, only 50 runs. And they have 5 wickets in hand. Carved away, Tejas. $125 for 5.
Well played. Might look for a couple. And will get it comfortably. Oh, this is poor, poor. You could see the bowler not collecting the ball and resulting in another run. I think they are feeling the pressure now. The fielding team is certainly under pressure. Already 12 runs coming from this over. Previous over going for 14 runs. Now 12 runs from this over. What a shot. A single couldn't be stopped. Single to mark the end of 15th over. 129 for 5. If you look after 15 overs, Qayi Warriors were 119 for 6. And Cancona Warriors are way ahead by 10 runs, having lost 1 wicket less than that of the opposition at this stage. Here's the players coming together to plan the strategy for the next 5 overs. 45 required from 30 balls. 30 balls, 45. Just a difference of 15 deliveries, and Pundalik has been brought on into his third spell. 9 runs require every over. It is not a big problem for them. They have been scoring 14, 16 runs every over now. 9 runs seems to be very easy for them. Pundalik into his final over. Wicket is the only key for Qayi Warriors now. In spite of good start being provided by Tejas, they have conceded too many runs. Chance of run out. No, this time the wicketkeeper was ahead of the stumps. A single to begin the over. 130 for 5. 44 required from 29. They need few dot deliveries to get the batter under pressure. Some tight overs of almost 5 to 6 runs. Couple of good overs. Slower ball on the pads. Easy pickings. Sudhakar. What a knock Sudhakar has played. 7 balls, 18 runs. Has completely taken off the pressure from Anuj. Already partnership of 13, just 15 balls. Goes past the outside edge. Still 1 over remaining for the trump card, Manish Kakode. But when will he bowling his final over is a big question mark. Well taken by the wicket keeper. A wide-ish yorker by Pundalik. Single dot. Single dot. 4 balls, just 2 runs so far, requiring 9 runs every over. Well struck, and what a catch! What a spectacular! There's the captain. Stupendous efforts in the field. Is this the breakthrough they were looking for? Pundalik strikes. The speciality of this catch was the ball was traveling at a pace of knots.
And it was always going away from the cover fielder, the captain, Hitesh Talwar. You could see in the action replay. Great camera work by AB25. He was almost parallel to the ground at the moment he took the catch. A mind-blowing effort. Such efforts pull things off. And he has pulled off a blinder. A great knock by Anuj comes to an end, contributing 38. 27 balls. Jagdish Patil, Jaggu. Now you can see by the other camera, the front camera in fact. Both the cameramen very, very agile. Jagdish Patil. He did the damage early on with the ball. Now he has to stay at the crease, give us support to Sudhakar, who is striking the ball beautifully from the other end. Oh, play and a miss. What an over this is. Just 2 runs and a wicket. A comeback over for Qayi Warriors. "24 balls, 44 is the equation. 43 in fact. 43 from 24 balls. Sudhakar. Sudhakar might be thinking, we have just lost a wicket. Can I go with the natural instinct? I think he has to go. Because the required run rate with a good over being bowled by Pundalik. And now you can see the final trump card being utilized here. Manish Kakode being brought on to bowl the 17th over. I think they have to bat out this over. But I think Sudhakar will have certain plans against Manish Kakode. He uses the long handle very well. 24 balls, 43 is the equation with 4 wickets in hand. Shot in length on a bounce to the fielder. So Sudhakar is away from the strike. And that brings Jagdish at the striking end. I think Jagdish needs to put a ball in the gap and give the strike back to Sudhakar. You can see ample of spaces on the one side. Inside a 30-yard circle, you can see only the umpire in the square leg region. Oh, what a delivery. Squaring the batter. Almost 35-degree spin for Manish Kakode on that occasion. Very sharp turn. A fuller length and again sharp turn. He is making the ball talk here, Manish Kakode. That will frustrate Sudhakar from the other end. Last 8 deliveries, just 3 runs. Shot in length, in the long on. It will be just a single. Last 10 deliveries, 4 runs have been scored and Sudhakar on strike. Quicker delivery, chance here, a big wicket and has been taken. Manish strikes. I was just talking about the batters need to watch this over. They need to bat out this over because it is Manish Kakode and Sudhakar looking to attack because the only 2 runs had come from this over so far. The dot balls that were bowled has done the trick here.
Thanks to Pundalik and now Manish Kakode. They have forced a wrong shot from the batter. Sudhakar was looking so good until he hit that shot. Vaishak, the new batter. I think the pendulum has once again swung in favor of Qayi Warriors. They took the wicket of Rahul Mehta and then they struck the wicket of Anuj. Now big wicket of Sudhakar. These 3 wickets in quick succession have brought them back in the match. Carved away and a good piece of fielding by Tejas. A single to end the spell for Manish Kakode. 17 overs, 134 for 7. 4 overs, 31 for 2. Standout bowling performance by Manish Kakode after scoring half century. 2 important breakthroughs in his bowling. .40 required, 18 balls. Oh, goes past the outside edge. Now with the tail up, Qayi Warriors. They know the big hitters are back in the dressing room. They have to just stick to the basics now. Slower ball. I think the spectacular catch from the captain, Hitesh Talwar of Anuj, brought them back in the match. They were taking the game away from the opposition at one stage. Rahul Mehta and Anuj, the partnership. Jagdish Patil. Well struck and straight to the cover. A dot ball, in fact, the captain making sure that no run is considered on that delivery. In the earlier part of the innings, he was fielding on the fence, but now he's inside a 30-yard circle, making some crucial breakthroughs. Slower ball and has been clubbed away. Fielder on a bounce to him, and they will go for the second. And a comfortable second in the end. A couple of runs taken. Dot 1, dot 2. The story of the over. Slower ball again. And will be a single in the long off. Solid comeback this has been by Qayi Warriors. They didn't give away the match at any stage, even though the batters were going hammer on tongue. Both Rahul Mehta and Anuj. They held their nerves. Oh, has it taken the outside edge? The batter is walking. They lose the 8th wicket now. Another wicket, another nail in the coffin.
Qayi Warriors are marching forward. They are just a step away from the spot in the semi-finals. The day they beat Bharat Arkas Stars, most of the teams thought that they have given a big sigh of relief for them, but not to be for a long time in the tournament. They are on the verge of a defeat here, creating biggest upset in the tournament, and now see where they are. 8 wicket down, 138, chasing 174. You need to give credit to Tejas, the way he handled the innings. Tejas back onto the bowling mark. Into his last over. 3 overs in the first spell. 21 for 2. Cut away. Third man will be misfilled by Sahadev, but just a single. Looking to play the ball fine, will pick up a single. I think if anybody will be happy on the field, it will be Peter Fernandes, because he had dropped Rahul Mehta when he was in his early innings. And if Rahul Mehta was still batting, I think almost the run chase would have been done by this time. Lovely shot. Samir will have to collect the ball from the fence. Jagu using that pedal scoop. 144 for 8. Another 30 required, but the number of deliveries are running out. Mistime shot will be a dot this time. He denies the single, the non-striker. Again, looking for the same shot, wide call by the umpire. Play and a miss. Dot ball to mark. In fact, a delivery to go in the penultimate over. We have witnessed one of the very close match, in fact, of the tournament, MACQUA State Premier League.
Looking for the same. Oh, wicket keeper has fumbled and given away 4 runs. 149 for 8. Completion of 19. Six balls remaining. 25 required. 4 sixes. Can Jaggu or the batter, the non-striker, help them to take home with those 4 sixes? Thanks to all the sponsors associated with MACQUA State Premier League, Majestic Bhojan, Multi Cuisine Bar and Restaurant, Purvarim, Goa, Deaths and More Events, Genie, Mumbai, Engine Enterprise Private Limited, Mumbai, Go Health Monitoring Services. Final over. Play NMS, a dot delivery. Now 5 balls, 25. 5 runs required every ball. One of the greatest match we have witnessed in this tournament. Oh, surprising the batter with a bouncer. And he calls on for the helmet. Suddenly ball went whistling past his nose. What a delivery. He was relaxed so far, but that ball has woken up him. You can see in action replay how close was the ball to his nose. As Krishna says, perfume delivery. Oh, well struck. And a good piece of fielding. Just a single. Oh, another dot ball. Now in just formalities remaining in driving seat position. 2 balls, 24. Struck down the ground. And a dot delivery. The journey for Cancona Warriors almost coming to an end here in this MACQUA State Premier League. They had a very good first match against Bharat Arkas Stars, and this time Jaggu finishes the match. A 6, but it's too long for 6 and boundaries to come. A comprehensive win finally for the Qayi Warriors. They march into the semi-finals. Thank you, Cancona Warriors, for being a part of this MACQUA State Premier League. All the best for your future tournaments.
We are in readiness for the post-match presentation. We have special guests today. Along with us, we have Sir Bhagesh Magdum, proprietor for MS Magdum Engineering. A warm welcome to you, sir, for the post-match presentation of this MACQUA State Premier League. It's a great pleasure to have you for this post-match presentation. Warm welcome, sir. I would like to call upon the losing team captain for Cancona Warriors, Viraj. If you can please join us. Viraj, tough luck. I think when it came into the first innings, you got wickets up front, but a partnership for third wicket between Manish and Peter took the game away at that stage. Yeah, so it was a tough situation for the batters. We lost a couple of wickets at the start, and also it was a wrong shot selection, I would guess. Also me, I played a very wrong shot, but the situation was really good. And at the end, the calculation was around 30 balls, 45. And we also lost the set batsman that also costed the game. Don't you think you have considered 30 runs extra? You would have bundled out the opposition for 140 when Manish departed. Yeah, it was a very good team effort, but at the end of the day, it's all about conceding extra runs at the end of the day, and also some misfieldings from our side, some catches dropped, and overall it was a good performance by them, and they had a very good hitters at the end, and I think the 25-20 run difference made. And what do you have to say about this MACQUA State Premier League tournament? So it is a very good opportunity for everyone to showcase their skills, and it's a good platform provided by MACQUA, and I would be thankful for them that they keep on continuing this in the future as well. Thank you, and all the best for your future tournaments. Thank you very much. I would like to call upon the winning team captain Hitesh Talwar, if you can please join us. Hitesh. Congratulations, Hitesh. It was a clinical job. You lost couple of wickets early, but partnership between Anish and Peter, and then a mind-blowing knock from Tejas helped you to post 173. Yeah, it was also a really good wicket to bat, and the ball was also coming really good on the bat. So our partnership and later on Tejas is hard hitting made us score 170, and it was a good total for our bowlers also to bowl well. Yeah. But when it came in the run chase, you picked up early wickets, but after that, a partnership between Rahul and Anuj at that stage looked like the game is going away from you. But you never lost hopes and came back strongly, picking up 3 successive wickets of Rahul, Anuj and Sudhakar. Yeah, Rahul and Anuj were playing really good, and there we thought that game is going on their way. But at last, it's cricket, and if we are 100% giving 100% and we have a focus everywhere, then the game can change anytime. A bit of credit goes to you as well, taking catch of Anuj. The ball was flying away from you. What a spectacular catch it was. Yeah, main thing is to stay attentive. You must think that every ball will come to me, and that's it. Yeah. Congratulations and all the best for the part of the tournament for the semis. All the best. That was Hitesh Talwar, the captain of Qayi Warriors. Now it's time to announce the MACQUA Man of the Match, and it goes to Manish Kakode for his great all-round performance. 51 of 37 deliveries, and then 4 overs, 31 runs, 2 wickets being picked up. Yes, Manish receiving the man of the match, MACQUA man of the match from the hands of Shri Bhagesh Magdum, proprietor of MS Magdum Engineering. Manish, first of all, congratulations. It was a great all-round performance. I think you posted a good total even after losing wickets in the middle overs. Yeah, at the starting, the pitch was bit difficult for
us to play. The new ball was coming off the pitch, so I just had one thing in the mind, just to carry on the game and take a good start and end well. But the way they started, you picked up quick wickets. Your team picked up quick wickets. Then a partnership between Rahul and Anuj looked to take the game away from you. But you all fought back strongly. And a few important wickets picked up by you as well. Yeah, in every game the partnership will be there, so we just had to stick the one plan and not trying to bowl and do some extra things. Just have to bowl dot balls. Our players had which fluctuated around there. You are playing various tournaments in leather ball. How was the feeling playing this MACQUA State Premier League? Yeah, first of all, playing at the Povarim ground is a big opportunity, and yeah, it's a very good tournament, giving us good opportunities and a good experience. Thank you, Manish, and all the best for the semis. We have along with us Bhagesh Magdum. Sir, welcome. काय सांगू इच्छिता तुम्ही इकडे आला या टुर्नामेंटला कसं काय अनुभव होता तुमचा? अच्छा, या टुर्नामेंट सांगायच्याबद्दल तर खूप छान वाटतं, कारण या जे ऑर्गनायझर आहे मॅक्वा स्पोर्ट्स ने खूप छान प्रकारे ऑर्गनायझेशन केलेलं आहे. त्यांना शुभेच्छा. Thank you very much, sir, for giving your precious time towards this function. Thank you. That's all we have from the post-match presentation. Do join us for the quarter-final number 4. Will be coming up between Kunlim 11 and Chogles Sports Club.